ଯୋଉଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଦିଆ ଯାଏ। Welcome once again. जो पिला माने लाइव रे अछंती समस्ते जॉइन सार बोली लिखिदेवे। शालिनी, संतोषिनी, रीना पंडा, ओम हरि, मेघना, all these students are on time. Thank you for joining the class on time. Thank you everyone who have joined the class on time. Okay. Okay. तो आरंभ करिया युद्ध। थैंक यू। जय जगन्नाथ। तो फास्ट वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु तुम समस्त को आज दिन जो महत्व रही आमर देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु श्री जगन्नाथ आज स्नान करती। ओके केमती मनीष को थंडा ज्वर काश सब हुए ठीक सेमती ठाकुर गाधाती भी ज्वर हुए अणसर घरे रुहती। हाँ तो आज देवस्नान पूर्णिमा समस्त को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। भगवान समस्त ऊपर कृपा दृष्टि बनई रखंतु। ओके और समस्त को बहुत आशीर्वाद दियंतु पिला माननकु जे से माने केमती बहुत धैर्यवान हेबे। जय जगन्नाथ। ओके so now we can start the beautiful chapter at the high school. At the okay so हाँ मु देखी जाई पारेनी दुर्भाग्यवशतः टीवी रे देखी। ओके सी तो आमको देखुं आम कौन ताकू देखा केडे केडे आखि तांकर आमर केड़ी केड़ी छोट छोट आखि तांकर केते बड़ बड़ आखि आमे ताकू देखि परिबा। हो सो बहुत पिला आसी गलानी जॉइन करी गलानी। ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन at the high school. हिचकी होची। ओके तो तुम मैंने टिके कंप्रोमाइज कर दबा आज क्लास रे सारा हिचकी बहुत होची। ओके हिचकी हो किंतु क्लास बंद हवानी पूरा जोश रे अछि। तुम सब अच्छा तो हाउ इज द जोश? हो देख पिले फास्ट मु इंट्रोडक्शन देवी ऑथर करो। ओके सो मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टोबर 1869 रे जन्म
30 ଜାନୁଆରୀ 1948 मृत्यु वाज इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी किए न जाने अरे महात्मा गांधी को किए न जाने तांको परिचय दबा कौन दरकार ना सो से ही ऑथर ओके पिले माने इटी कुआइछि हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस ये अहिंसा को प्रचार करथिले सी होउछन नॉन अदर दैन गांधी जी ओके तो यार ऑथर होउछंती महात्मा गांधी तमे सब मन पकाउछ किए मन पकेब हो मन पकाउथे केते किए मन पकाउथे हौ देख तो पिले एठी मु पढ़ा पूर्व गोटे जिनस समस्त को जणै दउची जे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी भितरे डिफरेंस कोन ऑटोबायोग्राफी पिले होउचे या जोटा को धर मु मो निज कहानी लिखिली सेटा होउचे ऑटोबायोग्राफी ओके ऑटोबायोग्राफी कौन जानी पारल तो निजे निजर लाइफ हिस्ट्री लिखा को ऑटोबायोग्राफी कह जाए सो एटी कह जाए पिले आज यू ऑल नो महात्मा गांधी बॉर्न इन वही समस्त गाड़ी था 1869 वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड ओके महात्मा गांधी होउछंती वर्ल्ड रो टॉलेस्ट लीडर हु इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड Mahatma Gandhi is the tallest leader of the world. बुक समस्त पाखे अच्छी तो so he is popularly called the father of the nation. पिले माने महात्मा गांधी को कौन कहा जाए फादर ऑफ द नेशन हे भगवान किए गोटे कहले सारा पैसा चोरी करथिबे मुंड बाड़े देवी रे और देखो मु स्टार्ट कर दूची महात्मा गांधी was one of the tallest leader of the world. He was the greatest of our independence movement. तो आमर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हेतला स्वाधीनता संग्राम सेतिरे सिए बड़ भूमिका नहीं ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन सांकु कौन कहा जाए ना फादर ऑफ नेशन कहा जाए बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा गांधी से महात्मा गांधी हवा पूर्वर इन हिज लैटर लाइफ तांकर लैटर लाइफ छोट बेलर कहानी केमिति थिला सेटा हमें पढ़िबा गांधी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन at Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. Just a minute. पिले मु बही बाहर कर दिया हमें पढ़िबा ओके मु बहीटा बोर्ड रे ओपन कर दउ जी हम समस्त को इजी होबो पढ़िबारे गोटे मिनिट मते दियो मु बुक ओपन कर दउ जी हमें पढ़िबा देन तमे मान भी देखि परिबो ओके गोटे मिनिट दियो मु खाली बहीटा ओपन कर दिया हम पढ़िबा
ओके एबे बीट बाय बीट पढ़िया ना ना खराब किसी भावेनी ओके सो देखो पिले कौन कुहाई as you know Mahatma Gandhi was born in was born in 1869 was one of the tallest leader of the world रो जने बड़ leader नेता he was the greatest of our independence movement आमर जो स्वाधीनता संग्राम हेतला मूवमेंट मीन्स कोन संग्राम तो सीए होचंदी सबुठु बड़ नेता he is popularly called the father of the nation तांकु कोन कुहा जाए ओके he is popularly called the father of the nation तो तांकु फादर ऑफ द नेशन बोली कुहा जाए जातिर पिता बोली कुहा जाए ओके बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा गांधी पिला माने से महात्मा हेबा पूर्व ग्रेट सोल महात्मा ग्रेट सोल इन हिज लेटर लाइफ गांधी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन से महात्मा हवा पूर्वरु तांको लेटर लाइफ कथा जदि कहिबा पूर्व समय कथा कहिबा से कोठी तांको पाठ पढिथिले एट राजकोट इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी कोठी पढिथिले राजकोट इंग्लिश स्कूल रे इन राजकोट इन द स्टेट ऑफ गुजरात को स्टेट रे गुजरात रो राजकोट इंग्लिश स्कूल रे महात्मा गांधी पढ़ी जानिथिलो अरे जानिथिलो देखो later it became a full-fledged high school and came to be known as Rajkot High School पिला माने राजकोट इंग्लिश स्कूल रे पढ़ी परवर्ती समय रे से स्कूल टा गोटे हाई स्कूल हेची ओके गांधी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम दिस स्कूल इन 1887 1887 रे गांधी जी ए स्कूल मैट्रिकुलेशन पास करिसंती एट द एज ऑफ 18 को एज रे 18 वर्ष बयस रे ओके गांधी जी को बयस रे मैट्रिकुलेशन पास करथिले 18 वर्ष बयस रे तमे तो एबे 16 14 15 16 वर्ष बयस 15 14 भितरे पास कर जाउछो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 1947 मसीहा परे द स्कूल वाज
renamed ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସରିଗଲା 1947 ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ନା ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇ ସ୍କୁଲ इन ऑनर ऑफ फादर ऑफ द नेशन से स्कूल ना कौन है अरे से स्कूल ना कौन है मोहन दास गांधी हाई स्कूल मोहन दास गांधी हाई स्कूल ओके भाविल केते प्राउड मोमेंट जो स्कूल रे पढ़ी से स्कूल तुम ना से स्कूल दिया जीवो से भले काम कले केते लोक तो डाक्टर होउचंदी केते लोक इंजीनियर होउचंदी केते लोक आईएएस होउचंदी किंतु कहा ना रे ता गा स्कूल सॉरी ता मैट्रिकुलेशन स्कूल होउची से भले काम करथिले बोली तांको ना हेतला तो देखो according to several accounts गांधी was not so brilliant गांधी जी बहुत ब्रिलियंट नथिले as a student he was noted to be good at English से इंग्लिश रे गुड नथिले फेयर इन अरिथमेटिक ताकर अरिथमेटिक टिके गणित पाठ टिके भलो होतला वीक इन ज्योग्राफी रे वीक थिले गुड इन कंडक्ट रे गुड थिले एंड बैड इन हैंडराइटिंग अक्षर भारी कदर्य ओके ओके अक्षर बहुत कदर्य थिला दो he did not have any high regard for his ability okay he was astonished whenever he won prizes and scholarships देखो पिले को है though he did not have any high regard जोथि पाई तांको किछि बड़ उपाधि दिया जायनी ओके तांको एबिलिटी पाई स्कूल टाइम रे he was astonished माने कोन सरप्राइज्ड से सरप्राइज्ड हुअंती जेतबले से प्राइज जीतंती आउ किछि स्कॉलरशिप पांती बा प्राइज जीतंती सेतबले गांधी कोन हुअंती सरप्राइज्ड हुअंती सो समय आसी गला पिले लेट्स रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट टू नो सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन द गांधी एक्सपीरियंस ए पोएट माने एक गपटा को पढ़िबा आउ गांधी को विषय रे हम अधिक कथा जानिबा एक्सपीरियंस ऑफ हाई स्कूल डेज as he himself had described it in his autobiography एई कथा कहउतली ऑटोबायोग्राफी जेहेतु गांधी जी तांको निज कहानी निजे लिखि छंती ताकू ऑटोबायोग्राफी कुहा जायछि तो जदि गोटे लोक निज कहानी निजे लिखे ताहाले ताकू कोन कुहा जिवो ऑटोबायोग्राफी then my experiment with truth named my experiment with truth तो से ऑटोबायोग्राफी जो बही लिखी चलती से बही रो ना कोन माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ट्रूथ संगे रे मोर परीक्षण एक्सपेरिमेंट यस सर नो तो देखो टेक्स्ट एबे टेक्स्ट बुझबा I was not regarded as a fool at the high school. मु स्कूल रे हाई स्कूल रे ओके निर्बोध बोली विवेचित हो नथिली फुल मीन बोका मु स्कूल रे बोका नथिली I always enjoyed the affection of my teachers. मु सबु बेले मो टीचर मानकर अफेक्शन को अफेक्शन माने कोन स्नेह मो टीचर को स्नेह को मु सबु बेले एन्जॉय करे मते माने मो टीचर माने समस्त अफेक्शन करंती सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर्स सर्टिफिकेट प्रगति सर्टिफिकेट प्रोग्रेस सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट used to be sent to the parents every year ओके मो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेरेंट को पाखु को प्रति वर्ष पठा जाए आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट
मोर किछि बैड सर्टिफिकेट नाही केबे मोर बैड सर्टिफिकेट दिया हैनी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रगति पत्र रे केबे बैड लिखा हैनी इनफैक्ट I even won prizes after I passed out of the second standard. So I even won prizes. ମୁଁ prize ଜିତିଛି after passed out of the second standard. Okay? तो से କହିଛନ୍ତି ମୁଁ second standard pass कला परे ମୁଁ कौन करछि पुरस्कार जीतिछि. Okay? देखो पिले in the fifth and sixth I obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively. पिला माने respectively अर्थ कोन यथा क्रमे यथा क्रमे सो एठी कुहाई जी in the fifth and sixth पंचम आउ षष्ठ श्रेणी रे I obtained scholarship मु कोन करछि स्कॉलरशिप पाइछि केते टंका मन रखिबो इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिफ्थ रे मु पाइछि स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 4 4 टंका पंचम श्रेणी रे एंड ओके सिक्स्थ क्लास रे पाइछि 10 सिक्स्थ क्लास रे 10 फिफ्थ रे 4 रुपीज सिक्स रे 10 रुपीज तमे भाबुतो 4 टंका पाइके एते खुशी अरे सेतो बळे 4 टंकार बहुत मूल्य थिला ओके तो एबे देखो an achievement for which I have to thank a good luck more than my merit okay ये हो जोटा achievement for which I have to thank good luck more than my merit मो merit थारु अधिक ओके तो एठी कुआइछि गोटिए सफलता जेउथि पई मते मोर श्रेष्ठता थारु सौभाग्य को बेसी धन्यवाद देबा को पड़ुछि मोर सौभाग्य मोर श्रेष्ठता मु जेति की पाठ न जानिछि मोर भाग्य मोर सौभाग्य सेति की मो साथ देछि an achievement for which I have thank a good luck more than my merit मो मेरिट मु जेमति पाठ पढुछि ताठु अधिक मोर सौभाग्य को मु धन्यवाद देबी काहा को धन्यवाद देबी बीट बाय बीट ओके छाडीबनी काहा को एटी शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो से काहा को अधिक धन्यवाद देइछन्ती तांको मेरिट को ना तांको गुड लक को सो तांको गुड लक को से अधिक धन्यवाद देइछन्ती बीट बाय बीट ओके ओके मेरिट मीन्स श्रेष्ठता मेरिट मीन्स श्रेष्ठता पिला माने जो तमे परीक्षा दउछ तमरो मेरिट लिस्ट बाहरनी जो माने चाकरी दउछन्ती चाकरी पय एंट्रेंस ताकर मेरिट लिस्ट बाहरनी ऊपर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ओके ये फर्स्ट रैंक रहला ऑल इंडिया रे की रैंक 1 ऑल इंडिया रे की रैंक 2 ऑल इंडिया रे की रैंक 3 दिस इज मेरिट तो गांधी जी को श्रेष्ठता थारु से तांको सौभाग्य को अधिक धन्यवाद देइछन्ती बुझी गेला देन पळे आसो my own recollection is that I did not have any high regard for my ability ताहले मोर निजस्व स्मरण एहा जे मोर दक्षता पाई मोर उच्च सम्मान नथिला पिला माने मो मेरिट पाई मते अधिक सम्मान दिया जाई नथिला ओके मो निजस्व मत ओके माय ओन रिकलेक्शन मो निजस्व स्मरण ओके इज दैट मु जहां मन पकई पाउची मो निजस्व स्मरण ओके मो निजस्व स्मरण या आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड मो पाखरे किछि अधिक रिगार्ड नथिला फॉर माय एबिलिटी मो एबिलिटी पाई मो योग्यता पाई ओके एबिलिटी मींस कोन योग्यता ओके then I used to be astonished whenever I won prizes
एंड स्कॉलरशिप्स मु निजे आश्चर्य हुए जिते बड़े मते किछि स्कॉलरशिप मिले आउ किछि प्राइज मिले से निजे एस्टोनिश्ड एस्टोनिश्ड माने कोन आश्चर्य एस्टोनिश्ड माने कोन आश्चर्य but I very jealousy guarded my character but I very jealousy guarded my character किंतु मु मो चरित्र को सजाग भावरे जगिथिली सो बट आई वेरी जेलसी गार्डेड माय कैरेक्टर मो कैरेक्टर को मु बहुत भलरे जगिची ओके मु कौन करछि मो कैरेक्टर को बहुत भल से जगिची द लीस्ट लिटिल ब्लेम इज ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय आईज पिले माने ब्लेमिश माने ब्लेम ब्लेम कोन निंदा ब्लेमिश माने निंदा द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश छोटिया निंदा ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय आईज गोटे गोटे पिला थांदी टिके टिके कथा कथा कांदी पकांदी गांधी जी हमर ठीक सेमती थिले जदि टिके तांको कैरेक्टर ऊपर किछि कथा पळे आसीतिला तांको आखिरु लुह गळी पड़तिला ओके हम स्कूल रे सब पिला मान नथा सेमती माने नाको गांदुरा ठीक सेही बळी गांधी जी हमर थिले माने कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग थिले ओके व्हेन आई मेरिटेड or seemed to teacher to merit a rebuke it was unbearable for me so एठी कुहा गला मु जते बळे गाली सुनिबा को योग्य विवेचित होउथिली बा शिक्षकों को जणा पडुथिला जे मु गाली सुनिबा योग्य एहा मो पई असह्य थिला ओके when I merited to seemed to teacher to merit a rebuke मते जेतबे टीचर गाली देबा पई योग्य भाबुथिले बा मु भाबुथिली जे मते एबे गाली पडिबो सेतबेले इट वाज अनबियरेबल असह्य असह्य अनबियरेबल असह्य अनबियरेबल कोन मेरिट 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 मींस कहली परा श्रेष्ठता मेरिट मींस श्रेष्ठता कहली परा ओके देन देखो पिले आई रिमेंबर having once received corporal punishment I remember having once received corporal punishment okay थरे शारीरिक दंड पाइथिबा कथा मोर मने पडुछि ओके आई रिमेंबर मु मन पकई पारुछि having once received corporal punishment माने कोन शारीरिक दंड corporal punishment शारीरिक दंड कोन शारीरिक दंड माने आंठुआ बस चौकिया बस ओके I did not so much mind the punishment मुझसे punishment को इतने mind करी नथिली as the fact तार fact या थिला that it was considered my desert it was considered my ओके से दंड विषय मु किछि भाबिली नाही कारण यह सत्य कथा हैला यह को मु पाइबा योग्य बोली विवेचना करा जायतिला ओके सो एठी कुआ जाई जे दंड विषय मु किछि भाबिली नाही कारण यह सत्य कथा हैला यह को मु पाइबा योग्य बोली विवेचना करा जायतिला ओके सो एठी कुआ गला आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट जो कॉर्पोरल पनिशमेंट मते मिली थिला मु ताकू माइंड को नेई नथिली as the fact that was considered my desert ओके जोटा को मते दबा पई विवेचित करा जायतिला I wept piteously मु अति दयनीय भाबरे कांदी पकाइथिली तो I wept piteously माने wept means कांदी पकाइथिली piteously माने दयनीय भाबरे दयनीय wept means कांदीबा ओके that was when से कथाटा सेतबळर जेतबळे I was in the first or second standard
से घटना से मत पनिशमेंट कराइला से घटनाटा हूँ से फास्ट कि सेकेंड स्टैंडर्ड थी ओके गांधीजी कहते से सेकेंड स्टैंडर्ड रे थिला बेले गोटे कॉर्पोरल पनिशमेंट कराइला शारीरिक दंड दि जाइतिला देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th सो पुणी आउ गोटे कथा कहले देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट सेई भलिया आउ गोटे इंसिडेंट अछि ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज 7th स्टैंडर्ड मु जेतेबेले सप्तम श्रेणी रे पढुथिली ठीक सेमती आउ गोटे घटना घटिथिला हेलो सर हेलो बेटा सो कौन से घटना जानिबा ओके देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th मु जेतेबेले 7th रे पढुथिली सेतेबेले सेमती गोटे घटना घटिथिला दोराबाजी एदुलजी गिमी कौन दोराबाजी एदुलजी जिमी दोराबाजी एदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर सेतबेले हेडमास्टर किए थिले हु वाज द हेडमास्टर एट दैट टाइम सेतबेले जेतबेले गांधीजी सप्तम रे पढुथिले हेडमास्टर किए थिले दोराबाजी इदुलजी जिमी बा गिमी भी हम कहि परिया दोराबाजी दोराबजी सॉरी दोराबजी ओके दोराबजी इदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर देन ही वाज पॉपुलर अमंग द बॉयज से बॉयज मानक भितरे बहुत पॉपुलर थिले आज ही वाज ए डिसिप्लिनारियन से कौन थिले जने डिसिप्लिनारियन थिले ओके श्रृंखला प्रिय बा श्रृंखलित डिसिप्लिनारियन श्रृंखला श्रृंखलित से जने श्रृंखलित व्यक्ति थिले ए मैन ऑफ मेथड एंड गुड से गोटे मेथड रो मनीष थिले ओके मैन ऑफ मेथड ओके तांको पाखरे सबु रो मेथड थिला ओके प्रक्रिया थिला आउ जने भल शिक्षक थिले आउ कोन थिले जने भल शिक्षक थिले ही मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड रो पिला मानको पई से जिम्नास्टिक आउ क्रिकेट को माने कसरत आउ क्रिकेट को बाध्यतामूलक करथिले सबु पिला क्रिकेट खेलिबे आउ कसरत करिवे सबु पिला क्रिकेट खेलिबे आउ कसरत करिवे अरे तुम स्कूल ले तुम क्रिकेट खेल ना नहीं कसरत करो ना नहीं सो देखो तांको स्कूल रे सेना कंपल्सरी कराइतला आई डिसलाइक बोथ गांधी जी कसरत को डिसलाइक करथिले कसरत को भल पाउ नथिले आउ खेल को मध्य क्रिकेट को भल पाउ नथिले आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल मु कोनोसी क्रिकेट एक्सरसाइज आउ तुमर फुटबॉल रे पार्ट निये ही नहीं क्रिकेट एक्सरसाइज फुटबॉल रे पार्ट निये ही नहीं अरे कौन के सब हाई मारलानी निद लगलानी आउ तो अल्प समय आ 15 मिनिट आउ जो जाए जीव नले सेकंड पार्ट रे करियो हम भाबुतले एटा सारी दे बेली ओके तुम इंटरेस्ट देखी मत लगुनि मु सारी पारि तुम इंटरेस्ट देखाओ न देखाओ कि मु सारी छोटिया चैप्टरटा सरी जीव कीप पेशेंस अरे धैर्य रख सो बिफोर दे गप शुणी की निद लगुच कि कसरत मीन्स माने ये जोग करवा कसरत मीन्स जोग करवा हाउ इज द जोश अरे जोश कहीं तमें घुमेले मु घुमेबी ओके so before they were made compulsory my shyness was one of the reason of this aloofness which I now see wrong पिला माने एटी कुहा जाईची ओके
सेगुड़िक बाध्यतामूलक करा पूर्वरु मु कदापि कोनोसी व्यायाम क्रिकेट फुटबॉल खेल अंशग्रहण करिनथिली। यह उदासीनता बार दूरत्व भावर गोटे कारण हेउची मोर लाजकुला नीति जहाकु मु भूल बोली एबे देखुची। ओके एठी जो कहिला माय साइनेस ओके वाज वन ऑफ द रीजन मो साइनेस मो लाजकुला पण गोटे बड़ रीजन थला फॉर दिस आलुफनेस व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग। ओके से आलुफनेस को मु वर्तमान रंग बोली भाबे। आलुफनेस को कौन भाबे रंग बोली भाबे। तो आलुफनेस रो अर्थ पिले कौन उदासीनता। आलुफनेस आलुफनेस मीन्स कौन उदासीनता। आलुफनेस उदासीनता। ओके वर्तमान मुद्दा को रंग बोली भाबुची। खेल ए सब जिनस प्रति मोर उदासीनता होची मोर लाजकुलापण मो लाजकुलापण पई मु खेली पारु नथिली। ओके हाँ एबे आसिला। ओके सर सारी दियंतु सारिबा ना जेते जल्दी सारिबा सेते जल्दी रिवीजन करिया। पाठ पढ़िया पई एते पछ गुंजे काई की अरे तळे बा बही अछि तळे बही अछि तळे बही अछि एटी कंप्यूटर अछि। तो सार कोन होची कोन माने ये बुझियो ना सब जिंस कहि हो। देखो आई हैड देन फॉल्स notion that gymnastic had nothing to do with education। पिला माने मोर गोटे फॉल्स नोशन थिला। ओके मोर गोटे कोन थिला फॉल्स नोशन थिला। ओके नोशन मीन्स कोन पिले भ्रम धारणा। ओके फॉल्स नोशन भ्रम धारणा भ्रम धारणा। अरे गोटा मु एकुटिया तुमको माने गणित पढ़ाऊची इंग्राजी पढ़ाऊची तापर पुणी विज्ञान पढ़ाऊची ओके इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊची। अरे सब पढ़ेला बेलू पुणी मु गोटे सब जिनस माने सब इंग्लिश मिनिंग जानी तो सब जिनस एडजस्ट करिया ना तमे एमती। ओके सो तमे एमिति कर जिते मात्रा रे शेयर करिवो जिते मात्रा रे सब्सक्राइब करिवो आहुरी बहुत बहुत टीचर आसी तुम पढ़े। ओके ओके सो देखो टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। पिला माने आमे पाठ पढुचे गणित करूचे आम ब्रेन शार्प होउची इंग्लिश पढुचे तापर सेटू विभिन्न एक्टिविटी करूचे ग्रामर पढुचे आम ब्रेन रो एक्सरसाइज होउची ब्रेन शार्प होउची। ठीक सेमती गांधी जी जानिले जे तांकु सेतबेले काहे कि फिजिकल सिखा जाउथिला। ओके तो सही कथा सी कहछन्ती आज मु जानि पारुची टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। करिकुलम संगरे मानसिक शिक्षा संगरे शारीरिक शिक्षार मध्य सेतिकी कोन शारीरिक शिक्षार मध्य सेतिकी जरूरत अछि। सॉरी मानसिक शिक्षार मेंटल ट्रेनिंग रो जेतिकी जरूरत अछि फिजिकल ट्रेनिंग रो सेतिकी जरूरत अछि। ओके the reason for my dislike was my keen desire to serve as a nurse to my father। okay the reason for my dislike मते सेगुडी को ना पसंद करिवार कारण अछि मु सेमिति तारे ना पसंद करू नथली काहे कि फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व नर्स टू माय फादर। मो बापा को नर्स हिसाब रे सेवा करिवा पई मते जो आनंदटा मिलुथिला सेथि पई मु ए सब जित स्कूल आवर परे मते जिम्नास्टिक आउ खेल पई पड़े तो सेई टाइम रे मु मो बापांकर सेवा करे। ओके तो मो बापांक सेवा रे मो इंटरेस्ट थाए मो बापांक सेवा रे मो मन थाए ये सर नो तो सेथि पई
मु कौन करे जदि ए काम करी एठी खेल कसरत करी तो सेठी मो बापा सेवा मु करि परिबि नाही। ओके सो एटी कुआ कीन डिजायर मीन्स कोन माने बहुत आग्रह कीन डिजायर मीन्स आनंद। ओके कीन मीन्स बहुत आनंद। ओके बा आग्रह बहुत उत्कंठा कीन डिजायर अत्याधिक उत्कंठा। as soon as the school closed जिते जल्दी स्कूल क्लोज्ड हो जाए आई वुड हरी होम बहुत जल्दी जाए मु घरे पहुंचे एंड बिगिन सर्विंग हिम एवं घरे पहुंची तांको सेवा करबा आरंभ करे। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। सो एटी को गला कंपल्सरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज को कंपल्सरी कर दिया गला कि हमें डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस ए सर्विस रो रास्ता रे वे मींस रास्ता रे डायरेक्टली पळे आसला सेटा पाठ पढ़ा पर मु जल्दी जल्दी बैग पैक करके बाबा को सेवा करिया पई जाए। सो सेही समय रे मते कोन करबा को गला जे तुमे खेल कूद कसरत करो तो एटा डायरेक्टली सेठी कोन बाधा सृष्टि कला। आई रिक्वेस्ट मिस्टर जिमी मु कौन कली मिस्टर जिमी को रिक्वेस्ट कली टू exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father। एमिति हेइनी जे मु आम हेडमास्टर को अवमानना करछि मु आम हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करछि टू exempt me मते सेत्रु बाद दिया जाऊ। exempt मींस कोन बाद दबा बाद। ओके बाद दिया जाऊ मते सेत्रु बाद दियंतु। ओके जिम्नास्टिक रो सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। सो मु कोन करबी मु फ्री हेला मो बापा को सेवा करबी। ओके देन देखो बट ही वुड नॉट लिसन टू मी किंतु आम हेडमास्टर मिस्टर जिमी ताकू सुनिले नाही। नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे वर्तमान एया हैला जे गोटे शनिवार व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग जेते बेले सकाळे हमर स्कूल थिला आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके सो एटी कुआ गला गोटे सैटरडे कोन हेची व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग रे हमर स्कूल थाए आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल मते होम रु स्कूल को आसीबा को पड़िबो उथि पई फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock चारिटा बेले मते घरु आसीबा को पड़िबो इन द आफ्टरनून को समय रे ना आफ्टरनून रे आई हैड नो वॉच एंड द could deceived me the cloud sorry the CLOUD the cloud I had no watch मो पाखरे कौन नथिला मो पाखरे वॉच नथिला। ओके आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी। ओके मो पाखरे कौन नथिला मो पाखरे घंटा नथिला एवं क्लाउड ओके मेघ मते घरु अपराह्न 4टा बेले खेल कूद पई स्कूल को आसीबा को देला नहीं। ओके मोर घंटा नथिला एवं मेघ मते प्रतारित करथिला। तो जो क्लाउड आसी जाइथिला से मते कोन करथिला डिसीव्ड मी। ओके डिसीव्ड मीन्स कोन प्रतारित प्रतारित। ओके आई हैड नो वॉच मो पाखरे वॉच नाही आई हैड नो वॉच एंड द मो पारे वॉच नथिला आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी। ओ क्लाउड ता मते डिसीव्ड करथिला बा प्रतारित करथिला। बिफोर आई रीच द स्कूल माने मते हैरान करथिला। बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट मु स्कूल रे पहुंचिया पूर्व सबु पिला सेटु पळै जाइछंती। ओके
The next day, Mr. Jimmy examining the roll. पिला मानकर रोल नंबर ओके अटेंडेंस को मिस्टर जिमी देखु थांती फाउंड मी मार्क absent से देखिले जे मु अनुपस्थित थिली being asked for the reason of absence I told him what had happened okay being asked for the से मते पचारू पचारू कि कौन पाइन तमे absence थिलो I told him what had happened कौन हेइथिला काली मु से कथा तांकू कहिली he refused to believe me से रिफ्यूज कर देले से ताको विश्वास कले नाही बिलीव कले नाही रिफ्यूज विश्वास करबा को मना कर देले ओके and ordered me to pay a fine of 1 or 2 onas ओना एक ओना 2 ओना ओके सो तुमको फाइन करा गला गोटे ओना नले 2 ओना तमे आनी की दबो ओके बुझी गला सो एटी कहला आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग तो मते कौन करा गला ना मु मिछ कहूची बोली ओके दोषी साब्यस्त करा गला कन्विक्टेड दोषी साब्यस्त आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग मते दोषी साब्यस्त करी दिया गला ओके आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग मिछ कहूथिबारु मते दोषी साब्यस्त करी दिया गला दैट डीपली पेन्ड मी अरे मते कोन हला सेटा मते बहुत बाधिला डीपली पेन माने मते बहुत जंत्रणा देला हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस देखो गांधी जी केमती थिले ताको कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग थिला ताको कैरेक्टर ऊपर को के टिके भी आंगुठी उठे दोतला से कांदी पकोतले सो ताको ऊपर एतले मिछ कहिवार लांछना लागिची जोटा कि से मिछ न कहि कि ताको लांछना दिया जाईची ओके सो तांको सेटा गभीर भाबरे जंत्रणा देईची हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस मु केमिति मो इनोसेंस मो सरलता को मु केमिति प्रमाण करिबी ओके मो निरीहता इनोसेंस इनोसेंस मीन्स कोन निरीहता मो निरीहता को मो इनोसेंस को मु केमिति प्रूव करिबी ओके देयर वाज नो वे सेठी किछि रास्ता नथिला मो निजको मो निरीहता को प्रमाण करिबा पई मो संगे कौन घटी ताकू प्रमाण करने मो पाखे किसी भी उपाय नहीं किसी भी रास्ता नहीं आई क्राइड इन डीप एंग्विश सो मु कौन कली मु गभीर मानसिक जंत्राणे कांदिली तो एंग्विश मीन्स कौन मानसिक जंत्रणा ओके कौन बिले मानसिक जंत्रणा ओके आई क्राइड इन डीप एंग्विश मु मानसिक जंत्रणा रे डीप एंग्विश रे कांदीबा को लागली आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी मैन ऑफ केयर सो आई सॉ दैट मु देखिली ए मैन ऑफ ट्रूथ गोटे सत कहूथिबा मनीष मस्ट आल्सो बी ए मैन ऑफ केयर से जने जत्नवान मनीष होथबा दरकार जे सत कहूबा मनीष जत्नवान मनीष होबा दरकार तो सत्यवादी मनीष मध्य जत्नवान मनीष होबा दरकार शिखुछ त पिला माने ओके दिस वाज द फर्स्ट टाइम ओके दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल ओके दिस वाज द फर्स्ट टाइम एरा प्रथम थर थिला एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस मोर केयरलेसनेस रो शेष या पर आउ किछि हेइनी एटा होछि लास्ट ओके सो this was the first time
and last instance of my carelessness. Okay, carelessness instance means kono dushanto. Okay, last instance मोर शेष दृष्टांत थिला carelessness रो या पर आउ carelessness हेइनी. I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. So देखो पिले आई हैड फेंट रिकलेक्शन दैट मोर जहा मने पडुची. ओके, आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड. ओके, फाइन मोठू निया जाई नथिला, रिमिटेड मु सफल हेइथली फाइन रिमिटेड रे. रिमिटेड मींस कोन छाड़ पाइबा. सो फाइन छाड़ पाइबारे मु सफलता हेइथिली. सो आई हैड फेंट रिकलेक्शन दैट मोर अस्पष्ट. फेंट मीन कोन अस्पष्ट. अस्पष्ट मोर अस्पष्ट मन पडुची जे आई फाइनली सक्सीडेड मु सफलता पाइथिली फाइन रु वंचित हबारे. ओके, देन देखो the exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. So the exemption ba baad padibata from exercise ru madhya mu vanchito heli kahinki was of course obtained as my father wrote. kahinki mu ता भितरु बाहरिली कहीं ना मो बापा निजे लिखिले. मो बापा निजे लिखिले जे हेडमास्टर को सेइंग दैट ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल. से मते घरे चाहती स्कूल परे. मो बापा निजे लिखिले जे मो पुओ को मो घरे चाहे स्कूल सरीबा परे. सो एई भली भाबरे मु आउ एक्सरसाइज करिबा पई गलेनी बा एक्सरसाइज करिबारु बाद करली बा एग्जेम्पशन. ओके, वंचित होबा. एग्जेम्पशन मींस छाड़ मिलिबा. छाड़ मिलिबा. ओके, मते आ बाध्यता मूलक नथिला. देन देखो but though I was known the worse for having neglected exercise. Okay, so it is but though I was known the worse for having neglected exercise. जदियो मु एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करिकी तार दंड पाइथिली. ओके, व्यायाम को अवहेला करिकी. नेग्लेक्ट मीन्स अवहेला. अवहेला. ओके, आई वाज but though जदियो आई वाज known the worse. ओके, worse मीन्स कोन कष्ट पाइबा. ओके, बा क्षतिग्रस्त होबा फॉर नेग्लेक्टिंग एक्सरसाइज. मु एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करथिली, गुरुजन को कथा मानि नथिली, सेथि पई मु तार वर्स मध्य पाइछि, तार माने खराब फल मध्य पाइछि. आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी. मु वर्तमान मध्य तार पेनाल्टी दउछि. ओके, so still paying the penalty of another neglect. I am still paying the penalty of another neglect. आउ गोटे नेग्लेक्ट रो पेनाल्टी मु एबे भी दउछ. ताले से आउ गोटे नेग्लेक्ट कोन ये तो गोटे नेग्लेक्ट गला. एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट गले गोटे दंड पाइले. ओके, तमे माने जेमति छोट बेले छोट छोट भूल करो, गांधी जी मंदिर सेमति छोट बेले छोट छोट भूल करंती. हमें मनीष भूलटा होबा स्वाभाविक, किंतु हमें भूल रु शिखिबाटा भी निहाती आवश्यक. गोटे भूल को बारंबार दोहराइले हमें केबे आगु को बढ़ी परिबानी. यस सर नो. ओके, सो सही कथा कुहाई छी. आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट. दैट मींस मु एबे भी पेनाल्टी पाउची आउ गोटे नेग्लेक्ट रो. ताले गांधी जी आउ गोटे कोन नेग्लेक्ट करिचंती देखिबा.
I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. So gote good handwriting education रो गोटे भल पार्ट बोली मोर ए धारणा नथिला मोर नोशन थिला नोशन मीन्स कहितली भ्रांत धारणा भल पढ़ाटा मुझे जानी किंतु भल हैंडराइटिंग दरकार बोली मु भावेनी मोर नोशन ओके मोर भ्रांत धारणा जे हैंडराइटिंग भल होबा दरकार ओके तो गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन गुड हैंडराइटिंग टा हमर गोटे नेसेसरी पार्ट नुह एजुकेशन रो बोली मोर नोशन बा भ्रांत धारणा थिला okay but I retained it until went to England when later especially in South Africa I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in the South Africa so ethi eya kuhaichi I got sorry but I retained it until I went to England मु से पर्यंत जानी पारि नथिली से पर्यंत मु इंग्लैंड रे पहुंची नथिली ओके so when later especially in South Africa I saw the beautiful handwriting मुझे तबले साउथ अफ्रीका जाइथिली आउ सेठी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग देखिथिली कहार ऑफ लॉयर्स वकील मानकर एंड यंग मेन born and educated in the South Africa ओके मुझे तबले साउथ अफ्रीका गली सेठी साउथ अफ्रीका रे लोक मानकर भलो हैंडराइटिंग देखिली ओके एंड सेठी कोन वकील मानकर भलो हैंडराइटिंग देखिली I was ashamed of myself and repented of my neglect ओके मु ओके मो नेग्लेक्ट पई ओके मो असुंदर अक्षर पई तो देखो एठी कोन कुहाई जी I was ashamed of myself and repented of my neglect ओके मु मो नेग्लेक्ट पई लज्जित थिली ashamed थिली लज्जित थिली जेहेतु सेठी समस्त भल हैंडराइटिंग थिला आउ मोर हैंडराइटिंग भल नथिला सेठी साउथ अफ्रीका रे खराब हैंडराइटिंग जहार सी भल पढ़ेनी बोली सेठी विवेचना करा जाए I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education मु सेठी अनुभव कली जे सेठी bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education सेठी bad handwriting टाकू imperfect education बोली विवेचना करा जाए सेठी perfect education bad handwriting को कुहा जाए तुम जेते भलो पढुताओ तुम हैंडराइटिंग जदी भलो नाही ताहाले तमे तम एजुकेशन imperfect तम एजुकेशन परफेक्ट नुह ओके आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन एबे मो मुंडे बुद्धि पसिला एबे जाई कि मु मो हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करिया पई चेष्टा कली बट इट वाज टू लेट किंतु सेटा बहुत लेट हे जाइतला आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ मो यूथ रो नेग्लेक्ट को मुताऊ पुनी रिपेयर करि परिबिनी लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्नड बाय माय एग्जांपल सो मो एग्जांपल रु सबु पिला को देखै दवा पई चाहूची शिखेवा पाई चाहूची ओके and understand that a good handwriting is a necessary part of education the good handwriting होची good education रो गोटे part I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning writing I am now of the opinion that मु वर्तमान एई ओपिनियन रे अछि चिल्ड्रेन शुड फास्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग पिला माने समस्ते आर्ट ऑफ ड्राइंग शिखिबा दरकार राइटिंग शिखिबा पूर्व
चित्र करवा शिखिबा दरकार लेखा शिखिबा पूर्वरु let the children learn his letters by observation as he does a different object such as a flower birds etc so ठीक है let the children learn पिला माननकु शिखिबा को दिया जाऊ लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन परीक्षण द्वारा लेटर को शिखिबा को दिया जाऊ as he does different objects okay जेमती से माने different object को देखी करि परिबे such as flower birds etc and let him learn handwriting only after he learned to draw objects तांकु सेत बळे हैंडराइटिंग शिखिबा को दिया जाऊ जेत बळे से माने ऑब्जेक्ट बनेबा शिखिबे जेत बळे से माने छवि बनेबा शिखि दिबे सेत बळे तांकु हैंडराइटिंग शिखेबा शिखै दिया जाऊ ओके हैंडराइटिंग केत बळे शिखिबे जेत बळे चित्र करबा शिखिबे he will then write a beautiful form hand ता परे जाई कि से माने गुटे भलो माने हस्ताक्षर लिखि पारिबे Sanskrit however proved a harder task in geometry there was nothing to memorize whereas in Sanskrit I thought everything had to be learned by heart Sanskrit however proved a harder task जदियो संस्कृत ता गोटे हार्डर टास्क बोली प्रमाणित होईची ओके हार्डर टास्क काहे ना संस्कृत बहुत घोषिबा पड़े इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज ज्योमेट्री रे किछि मन रखिबार न थाए वेयर एज इन संस्कृत आई थॉट संस्कृत रे मु भाबे एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट सब जिंस को हृदय रु पढ़िबा को पड़िबो दिस सब्जेक्ट वाज आल्सो कमेंस फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड ए संस्कृत ता 4th स्टैंडर्ड रु पळे आसे ओके तो संस्कृत ता कम फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड ओके as soon as I entered the 6th मुझे 6 गली I become disheartened the teacher was a hard taskmaster anxious as I thought to force the boys so as soon as I entered 6 मुझे तबले 6 को एंटर कली ओके तो as soon as I entered 6 मुझे तबले 6 को एंटर कली I become disheartened so मुझे तबले कोन हे गली निरुत्साहित तो हे गली I became disheartened ओके निरुत्साहित तो होई पड़ली ओके the teacher was a hard taskmaster टीचर कौन थिले जने बहुत बड़ टास्क मास्टर थिले anxious आग्रही as I thought जेमिति मु भाबुथिली to force the boys पिला मानु को बाध्य करिवा पई से आग्रही थिले there was a sort of a rivalry going between the Sanskrit and the Persian teachers तो सेता बेले गोटे राइवालरी बा गोटे शत्रुता राइवालरी मींस शत्रुता going between Sanskrit and Persian teacher Sanskrit teacher आउ Persian teacher को भितर गोटे शत्रुता चालू थाए the Persian teacher was Lenin okay so the Persian teacher was Lenin माने कोहल मनोवृत्ति okay the boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate to the students. So पिला माने तांको भितरे कथा हुअंती जे पर्सियन टीचर होचंदी बहुत भलो पर्सियन वाज very easy पर्सियन ता पढिबा बहुत सहज and the Persian teacher was very good बहुत भलो
and considerate to the student. पिला मानक प्रति से considerate. Okay. Okay. Considerate, दयाशील. 10 minutes. सरला तो अब कहीं सरीगला पिले. The 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 Asians the easiness tempted me, and one day I sat in the Persian class. Okay, the easiness, सहज पूर्णता. The easiness tempted me. The easiness tempted me, and one day I sat in the Persian class. So सेही सहज पूर्णता मते tempted कला कोठी बसिबा पई पर्सियन क्लास रे बसी आउ tempted कला पर मु जाई कि पर्सियन क्लास रे बसिथिली. Tempted means कोन? इजिनेस होची सहज भाव. इजिनेस होची सहज भाव. ओके. टेम्पटेड मी, उत्साहित. उत्साहित. ओके. द संस्कृत टीचर वाज ग्रीव्ड. द संस्कृत टीचर was grieved. Grieved means व्यथित हवा. व्यथित हेबा. Okay. He called me to his side and said, से मत तांको पाखु डाकिले आ कहिले, how can you forget that you are son of a वैष्णव father? Okay, से कोन हेले व्यथित होई गेले मते देखि कि क्लास रे मते डाकी कि तांको पाखु कहिले तमे केमिति भूली जाउ छ तमे होउछ वैष्णव फादर कर पुओ बेली. Won't you learn the language of your own religion? तुमे तम निज धर्मर लैंग्वेज पढ़िबा को चाहुन. If you have any difficulty, why not come to me? जदि तम पाखरे किछि डिफिकल्टी अछि तुमे मो पाखु आस. I wanted to teach you students Sanskrit to the best of my ability. Okay, I want to teach you students. मु तुम पिला मानकु सिखेबा को संस्कृत चाहे बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. मो द्वारा जहा संभव. ओके. तो मु जाई कि पर्शियन क्लास रे बसी जाईथिली. पर्शियन क्लास रे बसी गला पर संस्कृत टीचर मते देखिले. मते देखि कि सीए व्यथित होई गेले. मते तांग पाखु डाकी कहिले जे तमे जने वैष्णवी धर्मी बापाकर पुत्र तमे निज धर्मर लैंग्वेज सिखिया पई चाहुनो. ओके. मु तम सब पिला मानकु संस्कृत मो जेते यथा संभव सिखेबा पई चाहे. As you proceed further, you will find in it things of absorbing interest. You should not lose heart. Come and sit again in the Sanskrit class. So, सेठी Sanskrit teacher टाको motivate करूछंती. As you proceed further, जदि तुमे पुनी चेष्टा करबा आसी कि you will find in things of absorbing interest. तुमे ता भितरे बहुत गुडाए जिंस ऑब्जर्व करिवो जोडा तुमको इंटरेस्ट लागिवो. यू शुड नॉट लूज हार्ट. तुम मन आउ तुमे भांगिबो नाही बा मन दुर्बल करिवो नाही. कम एंड सिट अगेन इन द संस्कृत क्लास. तो संस्कृत टीचर मोटिवेट करूछनी जे तुमे आसो एवं संस्कृत क्लास रे बसो. तो दिस काइंडनेस पुट मी सेम. सेही तांकर जो काइंडनेस ता मते सेम मते निंदा देला. सेम मींस कोन निंदा. I could not disagree my teacher's affection. मु मो टीचर का स्नेह को affection को disagree बा अराजी करि परिबि नाही. Today I cannot but thank with gratitude of Krishna Shankar Panda बा पांड्या. For if I had not acquired the little Sanskrit that I learned then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. Okay, so जदि मु सेता बळे मु वर्तमान से शिक्षक को धन्यवाद दउची. से शिक्षक को ना कोन कृष्ण शंकर पांड्या. ओके.
ओके सो कहीं धन्यवाद दबा को पिले बाध्य होउची मोर संस्कृत टीचर को फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत जदि मु संस्कृत सीखी न थांती that I learned then I should have found it difficult to take any interest in our sacred books हमर धर्म ग्रंथ पढ़िबारे मु आज सक्षम हेई पारि नथांती in fact I deeply regret that ଆଉ ମୁଁ regret ମଧ୍ୟ କରୁଛି I was not able to acquire a more so knowledge of the language ଆଉ मते regret ମଧ୍ୟ लागुची जे मु से language विषय रे बहुत जिंस सिखि पारिली नाही ओके से language ऊपर बहुत ज्ञान आहरण करिया पई असमर्थ हेली ओके सो एठी हम चैप्टर सरी गला हां एठी किछि हार्ड वर्ड अछि ओके से हार्ड वर्ड गुडा को समस्त मन रखिबो ए हार्ड वर्ड रु भी क्वेश्चन आसुची हां सैक्रेड मींस होली बुक धार्मिक ग्रंथ ऑब्जर्विंग डीप द बेस्ट ऑफ एबिलिटी as soon as we can ओके तो एई जिंस गुडा को सब ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता व्यक्त करिबा धन्यवाद प्रकाश करिबा ओके कृतघ्न ओके बुझी गला मु तांको धन्यवाद देई के रही पारुनी मो ग्रैटिट्यूड शो करिवि तमे जेमते ग्रैटिट्यूड तुमको जदी के ओटे भलो शिक्षा देला तमे ता प्रति कोन धन्यवाद शो कर ताको ता प्रति खुशी हो सो सेटा ही ग्रैटिट्यूड ओके धन्यवाद देबा सो पिला माने हमरो सबु बेले 8 रु 9 9:30 रु 10:30 दीटा क्लास आज हम ओके सो तुम समस्त को 8टा रु आसिक क्लास जॉइन करने को पड़ो ओके जो पिला माने नुआ चैनल को देखुचंती चैनल को समस्त सब्सक्राइब करेंगे ओके मु ओके सबु बेले 8टा आसीबी आम क्लास पढ़ा देन आज क्लास रेती की सब पिला टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दियो आउ पिला माने जो माने देखुच केही भी लाइक आउ कमेंट केमिति क्लास लागिला न दे के जीवन हैला काई ना कमेंट देले तो फीडबैक रे हमको मोटिवेशन लागिवो तो समस्त एटा करिवो एंड एप्लीकेशन उत्कल क्लासेस रो डाउनलोड करिवो ठीक अछि सब पिला लाइक कर दियो टाइम टेबल मु देई देबी ऋषि हाय सर हेलो बेटा ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता हाँ ठीक अच्छी टाइम टेबल सर आज दे देवी आज तो हो गला 11टा बाजीगला आज ओके मुझे घर को जी घर को जाकि फास्ट तुमको टाइपिंग करी टाइम टेबल पठेदेवी ओके टेलीग्राम चैनल रे टाइम टेबल पठिया हो ओके क्लिक द लिंक बिलो फॉर जॉइनिंग टेलीग्राम चैनल ओके ओके ठीक अच्छे पिले मु संपूर्ण चेष्टा कर तुमको सब सब्जेक्ट दबा पाई ओके वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू आमे तुमको किसी चार्ज नौनु आमे सब क्लास केमती तुमको दबु चेष्टा करछु तो यू हैव टू हेल्प अस तुमको हमको सहायता करबा को पड़िबो जदी तुम पाठ पढ़िबा को चाहूछ उत्कल क्लासेस थारु ओके काइना बहुत टीचर रखिले वर्तमान से मानको पेमेंट वगैरह सब जिंस करिया को पड़िबो बुझी पारछ ना पेमेंट वगैरह करिया को तुमको चार्ज नवा को पड़िबो मु चाहेनी ए वर्ष कौन सी पिला आम चार्ज नौ आम डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने चाहूँ तुमको ओके सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास पुणी देखा आम नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत रहुची जय जगन्नाथ सबु पिला कमेंट रे जय जगन्नाथ लिख रात्रि जाइए आराम से शुआ मु टाइम टेबल पठेदेवी काली आम पाठ पढ़ा थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस यू ऑल।